What's up guys, welcome to Art Blues. This is a brand new video और आज हम लोग बनाएंगे 9 o'clock flowers with watercolor. These are also known as portulaca flowers, but इंडिया में इसको 9 o'clock flower बोलते हैं. मैंने एक सैम्पल बनाया था पहले in a smaller sheet, but now I'm going to use an A4 size paper and इसके लिए masking tapes use करेंगे to keep the borders. Generally I do not keep borders, but for this one I will. So the paper is ready. Flowers के लिए आज मैं use करूँगी pink, crimson, orange and blue. और यहाँ पे मैंने आज 12 साइज का ब्रश लिया है. I'm keeping size 4 and size 1 as well, but mainly I'm going to use the 12 size. Painting मैं नीचे से start करूँगी. फूल, पत्ते and the bushes, but first I'm going to start with the flowers. Pink से start करते हैं. I'm going to keep these accidental effects. कलर बिल्कुल ज़्यादा यूज़ नहीं करना है. मैं यहाँ पे कुछ भी आउटलाइंस भी नहीं बना रही हूँ. जस्ट ड्रैगिंग द कलर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द फ्लावर. और यहाँ पे और एक बनाऊंगी मैं. दिस वन विल बी फ्रंट फेसिंग. सिमिलर वे आई विल पुट द डार्कर शेड towards the center of the flower, and then I'll wash the brush and I'll drag it up and down. बीच बीच में ब्रश को ड्राई करना जरूरी है. If you are noticing, I'm using very less color. If there is more color, I'm just washing it off with water. और यहाँ पे बनेगा और एक. Now time for some oranges. Similar way में I'll drag the colors off and the center will be darker. Now I'll mix some blue with pink and make some purple shade. अगर कलर ज़्यादा हो गया तो just wash it off. That's the trick. To keep the center darker, in these purple ones, I'm using some blue. इसमें कलर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, इसलिए I'm washing them off. I'll make one more here and some more oranges as well. Small ones with darker centers. Now I'm taking pink and इसको थोड़ा manage करना है because this one became a little too washed out, so I'm putting pink in the center. A little bit of outline just to give some extra effect. और purples में I'm using blue, just letting the color to smudge and keeping accidental effects. Pinks में I'm using pink, dark pink in the center, and some crimsons for shading. Orange में भी towards the center
and putting some crimson color. और मैं थोड़ा ड्रैग कर रही हूँ कलर को towards the petals so that the shade is prominent. Now I have to just let it dry for some more time. Once it is dry, I'm taking a little bit of gray shade, and before starting the stems, I'm going to put the gray in the center of each flowers. यहीं से हमारा stems शुरू होगा. अभी मैं sap green color use कर रही हूँ to draw the stems. Just some random lines. यहाँ पे सैप ग्रीन के साथ थोड़ा डार्क ग्रे मिक्स करके आई एम डैबिंग अ लिटिल मोर कलर, डार्कर शेड ऑफ कलर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टेम्स. Just washing off extra green colors, and now we will start the leaves. 9 o'clock flowers basically they grow in bushes. इसके पत्ते एकदम छोटे छोटे होते हैं, and I'm going to draw the leaves with sap green mixed with dark gray. So all the leaves and stems towards the front of the painting will be darker in shade, and towards the back side I will use very light shade of sap green to give it a little more depth. ऑलमोस्ट बन गया है. अभी यहाँ नीचे हल्के से I'll just dab some sap green mixed with water, just 70% water and 30% color. And similarly पीछे भी थोड़ा extra leaves add करेंगे in lighter shade. And we are done. ये completely dry होने के बाद we have to remove the tapes. Otherwise आपका पेपर डैमेज हो सकता है. And I'm just dabbing some clean water on the borders just in case the paper is rough there due to the tape. And ऊपर भी थोड़ा सा clean water यूज कर रही हूँ. और हमारा आज का वाटर कलर फ्लोरल पेंटिंग इज डन. आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. Please try this at home and let me know how it went. And if you haven't subscribed my channel yet, please do subscribe. और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा. Thank you for watching. Stay safe, stay happy.